Bismillah walhamdulillah. This is the third lecture of embryological clinchers and inshallah we will be covering the next sections here जो कि ectoderm से next हम move कर रहे हैं. In the previous lectures we have covered cell division, female reproductive system, contraception, week 2, gastrulation. ये सारी files हो चुकी हैं. अब हम यहाँ से move करेंगे आगे. In this file we will be covering two important parts. First one is the ectoderm and the next one is the mesoderm I think so. हम डायरेक्टली चलते हैं फर्स्ट वाले पार्ट पे, दैट इज़ द डेरिवेटिव्स ऑफ एक्टोडर्म. और यहाँ पे निमोनिक के साथ सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. ये डायग्राम्स के साथ टेबल्स भी मेंशन्ड हैं, तो उसको हम अभी स्किप करें क्योंकि हमें चाहिए क्लिंचर्स. सो द फर्स्ट पॉइंट इज न्यूरल प्लेट इंडक्शन इज कास्ड बाय द नोटोकॉर्ड. Notochord initiates neural plate formation. Neural tube closure begins in the cervical region at day 22. Then cranial neuropore closes by day 25 caudal by day 27. ये MCQ प्लैब के लिए भी आया हुआ था एंड द नेक्स्ट वन इज FCPS का भी इम्पोर्टेंट है. तो एक्चुअली ये सिमिलर कंटेंट अब जो न्यू सिलेबस आया है JCAT का उसमें भी इंक्लूड है, उसमें भी सेम पॉइंट मैंने पढ़ा था. The next act, neural crest cells undergo epithelial to mesenchymal transition जो EMT है, essential for neural crest migration. Derivative of neural crest lumen from ventricle and central canal, brain ventricles from central canals, neural tubes. Melanocytes are derived from neural crest cells. तो ये important point है. Sonic hedgehog induces ventral neural tube differentiation, key molecule for neural tube patterning. Folate deficiency is the most common cause of neural tube defect. तो इसको हमने देना होता है 400 माइक्रोग्राम पर डे के लिए से टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स. और जो फीमेल पेशेंट्स हैं उनके अंदर अगर प्रेगनेंसी भी हो साथ में उनमें प्रॉब्लम आ रही है एपिलेप्सी की या फिर वो हाई रिस्क लेडीज़ हैं, तो ये डोज बढ़ जाती है टू 5 mg तक. ये 400 माइक्रोग्राम की बजाय 5 mg पर डे के डोज चेंज हो जाती है. देन नेक्स्ट है ectoderm gives rise to the anterior pituitary. The answer is anterior pituitary surface ectoderm derived. So the next one is mesodermal derivatives और इसमें हमारे पास टेबल यहाँ पे अवेलेबल है. First somite appears on which day of development? The answer is day 20. How many somite pairs form by day 25? The answer is 5 pairs. The somite derivative responsible for vertebra formation is scleroderm. Which layer of mesoderm forms the urogenital system? That is intermediate mesoderm. ये important है और ये complete आपको यूरोजेनिटल सिस्टम आना चाहिए. वैसे ही MBBS के लिहाज से बहुत हाई यील्ड टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा MCQs आपके पास्ट में आए हुए हैं फर्स्ट ईयर के पेपर्स में. Name the mesoderm that splits into somatic and splenic layers. The answer is lateral plate mesoderm. Intraembryonic coelom gives rise to how many major cavities? The answer is 3. Next is signaling pathway primarily involved in somite formation. The answer is FTF and WNT signaling. Which mesodermal component forms skeletal muscle? Answer is myotome. Counting somite pairs is used to estimate embryonic age during which time frame? The answer is day 20 to 35. The pleural cavity arises from which embryological structure? The answer is intraembryonic coelom. And here we have important atlas. I think इसके अंदर हर वो चीज़ mentioned है जो आपको पता होनी चाहिए. Okay, next फाइल की तरफ मूव करते हैं. That is CVS plus folding. इसके अंदर हम पहला टॉपिक कवर कर रहे हैं, that is here CVS. और CVS में हमारे पास है टेबल ये वाला. So इसमें है the process of new blood vessel forming from pre-existing vessels is known as angiogenesis. Which factor plays a major role in the development of angiogenesis? Is the VEGF. Then है in which week does the heart start beating during embryonic
डेवलपमेंट। और ये वाला बड़ा ही फेमस एमसीक्यू है, ऑलमोस्ट हर जगह ही पूछा जाता है। डे 22, कैपिलरी हेमेंजियोमा कॉमनली फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी? द आंसर इज हेड एंड नेक। ये भी आया हुआ है एमसीक्यू में, ये सर्जरी के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द इनिशियल इन सर्कुलेटरी सिस्टम इन एन एम्ब्रियो इज प्रोवाइडेड बाय विच structure before the placenta is established? That is yolk sac. The which vessel is derived from the fourth aortic arch in human embryonic development? The answer is subclavian artery. ये पूरा टेबल ही important है aortic arch वाला. What is the main feature of capillary hemangiomas in terms of blood vessel structure? The answer is thin walled capillaries. The fusion of two endocardial tubes during embryogenesis forms which initial heart structure? The answer is heart tube. Which embryological structure eventually forms the adult systemic arteries? The answer is aortic arch. And the next one is from the folding, और इसमें हम देखते हैं टेबल में है क्या चीज़ें हैं. Okay, the main structure that shifts during cephalocaudal folding is the heart. Heart tube moves from cervical to thoracic region. Next is the lateral fold helps in the formation of coelomic cavity. Lateral fold forms the body wall and coelomic cavity. A defect in cephalocaudal folding can cause an azencephaly. Gastroschisis results from the from incomplete lateral folding. Lateral folding defects cause abdominal wall defects. Cephalocaudal folding begins in the fourth week of embryonic development. तो ये fourth week में होता है. In the lateral folding, the might contribute to body formation. A key result of lateral folding is the formation of primitive gut. Omphalocele is associated with improper lateral folding. The next is cephalocaudal folding is critical for repositioning of the heart tube. और यहाँ पे ये वाला भी टेबल कंप्लीट होता है. हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, डेट इज कंट्रोल प्लस फोल्डिंग प्लस जर्म लेयर्स ऑफ फाउंडेशन पे. और यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ें अवेलेबल हैं. ओके, जर्म लेयर डेरिवेटिव्स में हम आ चुके हैं, और इसमें आपको ये वाला निमोनिक आपको अच्छे से यहाँ पे देख लें. जिनके पास नहीं है उनके लिए स्पेशली कि आप इसको अच्छे से याद करें, इसी में से सारे एमसीक्यूज आते हैं मोस्टली. Endoderm gives rise to which of the following structure? The answer is CNS, skin या sensory organs. Which layer is responsible for forming the kidneys and gonads? The answer is mesoderm. Thyroid gland is derived from endoderm. Which mesoderm derivative forms the heart and blood vessel? Lateral plate mesoderm. Which of the following is derived from ectoderm? Answer is retina. The pancreas is derived from endoderm. Which structure is formed from the subplankton mesoderm? The answer is heart. The mucosa of GI tract is derived from endoderm. Skeletal muscle of body is derived from somatic mesoderm. Okay, the next one is the control of embryonic development plus folding of the embryo. और इसको हम देखते हैं इस टेबल से. The homeobox gene regulate the development of the segments. The second month of the embryonic development is crucial for the major organogenesis. और यहीं से मेन स्टोरी स्टार्ट होती है सेकेंड मंथ के बाद, जो मोस्टली 24 वीक से आगे काउंट किया जाता है. उसके बाद हम इसको बोलते हैं. नेक्स्ट है विच द मोस्ट एक्यूरेट पार्ट फॉर मेथड फॉर एस्टिमेटिंग गेस्टेशनल एज इज द फर्स्ट इन द फर्स्ट सेमेस्टर इज अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड और क्राउन रम लेंथ उससे हम मेजर करते हैं. The typical embryonic age is approximately 2 weeks less than the gestational age. ये बड़ा ही important MCQ है, SCQ में भी पूछा जाता है. Host gene are responsible for the patterning of structures along the anterior posterior axis. Somites appear during third week of embryonic development. आगे है Carnegie staging system is primarily based on morphological features. In the first month, the digits start forming and become visible. The heart starts beating after around week 6 of embryonic development. ये already एक MCQ आया था, उसी repetition है. उसमें days थे और इसमें week है, तो वहाँ से past paper से ये लिया हुआ है. Okay, the next one is the fetal periods status है placenta के ऊपर. तो यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू fetal period एंड स्टेटस के बारे में. और ये बेसिकली आगे वाले पीरियड्स हैं, तो इसलिए ये काफ़ी डिटेल में अच्छे से मेंशन किए हुए हैं, टू द पॉइंट बातें हैं यहाँ पर. तो हम इसके डायरेक्टली टेबल पे ही चलते हैं.
Let's see. Which week does the fetal start heart start beating? अब इधर आप देख सकते हैं कि कितनी बार ये एमसीक्यू रिपीट हो चुका है, तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये कितना ही इंपॉर्टेंट है। व्हेन इज द फीटस कंसिडर्ड वायबल आउटसाइड द वomb? द आंसर इज 24 वीक। ये वही वाली बात है, ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है, इसके बाद अगर मिसकैरेज होगा तो उसको हम मिसकैरेज की बजाय अबॉर्शन बोलेंगे, और इससे पहले मिसकैरेज बोलते हैं। What is the critical period of teratogen exposure in embryonic development? Is the week 3 to 8। बेसिकली इसके अंदर उसके लिम्स बन रहे होते हैं, सॉरी ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, या समझ लें कि उनके वाइटल स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, उसकी प्राइमोर्डियल बॉडीज बनना स्टार्ट होती है। ऑर्गन बनने से पहले की थोड़ी सी स्टोरी है ये, ठीक है, और उसका भी कुछ हिस्सा इसमें शामिल है ऑर्गन फॉर्मेशन का। What which imagining technique is most accurate for estimating gestational age? Is the ultrasound repeat? Or what is the most common complication of low birth weight? Is respiratory distress syndrome, RDS? Which condition characterized by high blood pressure, proteinuria, and edema in pregnancy? The answer is preeclampsia. At what week do fetal movement becomes visible to the mother? The answer is week 17 to 20. What is the normal range for fetal heart during the third trimester? The answer is 120 to 160 beats per minute। और याद रखें अगर 160 से अबव होगा तो हम इसको एबनॉर्मल कंसीडर करते हैं, जो सीटीजी में हमें मिलता है। What is which factor most commonly causes intrauterine restriction? Placental insufficiency। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको आपने एज इट इज ही मार्क कर लेना है। What is the main method for assessing fetal well-being? The non-stress test, NT, NST इसको बोलते हैं। What is the most common cause of intrauterine restriction? Maternal hypertension। यहाँ पे intrauterine growth restriction और यहाँ पे intrauterine ये है ये है मोस्ट कॉमन रीजन मैटरनल, ये मैटरनल रीजन है, और ये वाली जो रीजन यहाँ पे पूछी हुई है पास्ट पेपर में, दैट इज प्लेस फीटल फैटल रीजन पूछी हुई है, तो ये डिफरेंट है दोनों। ठीक है, इस तरीके से आपने इनको याद रखना है। इनमें से जो भी एमसीक्यू आएगा यानी जो पॉइंट होगा आप उसको टिक कर सकते हैं, दोनों ही पूछे हुए हैं। विच फीटल measurement is used to assess gestational age after 20। after 20 आएगा तो biparietal diameter, ये important होते हैं डायनामिक्स जो हम मेजर करते हैं। what is the most common fetal abnormality seen in pregnancy with IUGR? intrauterine growth जो restriction है उसमें ओलिगोहाइड्रोमनियाज होते हैं, यानी amniotic fluid कम होता है। what does a high ratio of umbilical artery Doppler indicate? The answer is fetal compromise, that is IUGR. Which factor is most associated with fetal growth retardation in multiple pregnancy? The answer is maternal nutrition, जैसे आपसे ऊपर पूछा था उस तरह। नेक्स्ट इज द प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा का सारा डेटा आपको नजर आ रहा है, और हम यहाँ पे क्लिंचर पे आ गए। विच फीटल if membrane is responsible fluid protection around the fetus is amnion, और इसी की amniotic fluid होता है। What is the primary function of syncytiotrophoblasts? Is the hormone production? Which structure forms the maternal part of placenta? The answer is decidua bizalis। Trophoblast differentiates into cyto and syncio, repeat हो गया। Which structure is involved in the formation of umbilical cord? That is allantois। Then what type of circulation occurs in the placenta intravillous space? The answer is maternal circulation. The maternal blood is separated from the fetal blood by fetal membrane. Then what is the cause of erythroblastosis fetalis? The answer is RH incompatibility. Trophoblast layer invades the maternal endometrium to form what? Placenta villi। तो ये हमारे पास नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टेबल्स और फिगर्स एटलस जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनकी, तो इसको हम स्किप करते हैं और यहीं पे आज का हमारा कंप्लीट होता है पार्ट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम लास्ट पार्ट होगा और उसमें हम फेटल मेम्ब्रेन और ये लास्ट प्रीनेटल डायग्नोसिस कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।